फरी आ रहे सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम HSR लेआउट एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पर मैं रहता हूँ बैंगलोर में। और ये जगह काफ़ी अच्छा लगता है मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेस, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ मिल जाता है, सभी कुछ पास में ही है और शांति भी है। ऊपर से शांति नहीं का शायद सिग्नल बिगड़ गया है। कोई भी कहीं से भी आ रहा है अब बस आज ही बिगड़ा है शायद। थोड़ी देर रुकेंगे ATM पे, मुझे थोड़ा सा काम है। One hour later. भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। कितनी अच्छी जगह थी यहाँ पर। ओह वाव, ये तो हम जंगल में आ गए। We are exploring jungle tonight. Wow, what a beautiful house. What a beautiful car. Skoda in grey color. Licha. रास्ता मुझे पता नहीं है, जहाँ पर ये आगे वाला टोयोटा गाड़ी जाएगा मैं वहीं पर जाऊँगा। और ये अंदर जाना है। Are you kidding me? Really? No, it's not possible. No, it's not possible. लेकिन आती नहीं और मेरी जाती नहीं।
तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं खो चुका हूँ टोटली, मुझे पता नहीं कहाँ पर जा रहा था, तो इसलिए मैं अब मैप का हेल्प ले रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑलवेज माई सेफ्टी नेट कि कहीं पर खो जाए तो मैप निकाल लो फटाफट। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अमोर आइसक्रीम पार्लर विच इज़ वेरी फेमस फॉर जिलाटो। अभी रिसेंटली शार्क टैंक में आए थे वो लोग अपना इक्विटी शेयर करने के लिए, बट इक्विटी शेयर टू आस्क फॉर इन्वेस्टमेंट आई मीन। और वहाँ पर वो बोल रहे थे कि वो एकदम वेज प्योर वेज आइसक्रीम है, मीन्स कोई अंडा मिक्स नहीं है उसमें। गिलाटो बोलते हैं या गिलाटो बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट एंड हाउ इज इट प्रोनाउंस। जो आइसक्रीम का नाम नहीं बोल सकते वो आइसक्रीम खाना है हमको। तो अभी हम एंट्री करने वाले हैं गिलाटो फैक्ट्री आइसक्रीम खाने के लिए। लेट्स सी। स्मेल तो अच्छा रहा है। बहुत ही एस्थेटिक टाइप का यहाँ पर मतलब क्रिएट किया गया है लोकेशन। रूबिक्स क्यूब मतलब गेम्स बुक्स सभी है। Cassata. मैंगो। Mango restaurant. Oh, I feel this one also looks good. Which one? Coffee van. Thank you. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो चाबी के साथ मैंने लटका दिया है घर का चाबी भी, कि कहीं ये खो ना जाए इसी डर में। तो गाइस अभी हमने आइसक्रीम भी खा लिया है। आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी था, एकदम रिच फ्लेवर वाला था। और आइसक्रीम खाने के बाद हमें पता चला कि वो शार्क टैंक वाला गलाटो था ही नहीं, इट वॉज अ डिफरेंट गलाटो, इट वॉज नॉट इवन इटालियन, बस नाम उसका गलाटो रख दिया, पर कोई नहीं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा आज मैंने पूरा आपको HSR लेआउट दिखा दिया है, HSR लेआउट सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। So if you really like this video then don't forget to hit the thumb and bell icon। thumb बोल रहा हूँ, don't forget to like this video। अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।